students, how are you? I hope all are good. Today let me start SST chapter number 9 environment यानी कि हमारा पर्यावरण. Let's begin. The earth is the home to human beings and other living organisms. जो पृथ्वी है वो ह्यूमन बीइंग यानी सभी जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, प्राणियों का एक घर है. This is possible due to the presence of favorable living conditions that make up their environment. ठीक है, due to the presence of favorable living condition. तो जो मतलब this is the possible due to the presence of favorable living. तो ये इस पे क्या है, अर्थ पे रहना बहुत पॉसिबल है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस दैट मेक अप देयर एनवायरनमेंट. तो कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड होती है. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं, let's talk about natural environment. The term environment refers to the surroundings or conditions with which a person, animal or a plant exists. It is a combination of natural and man-made phenomena. Okay, तो इसमें बात हो रही है, the term environment refers to the surroundings or conditions with which a person, जो हम रहते हैं, जैसे हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको हम बोलते हैं environment. एनिमल मतलब वो सभी चीज़ों के लिए होता है, चाहे वो जानवर है चाहे वो मनुष्य है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फेनोमेना. नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स बोथ बायोटिक एंड बायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस अमंग डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स. द टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. दे चेंज इन कोर्स of time from place to place due to natural processes and human activities. Biotic components. The biotic components comprise living beings like microorganisms, plants and animals including man. This is also known as living for biological environment. So abiotic क्या होता है? Then abiotic components comprise the inorganic or non-living things in the environment based on the physical state and characteristics. Water found in oceans, seas, rivers, lakes and streams, etc. and in the form of ice and snow together make the hydrosphere. It occupies a major part of the Earth's surface and has an importance of its own. More than 70% of Earth's surface is covered with water. We cannot imagine life on Earth without water. Water is essential for all living organisms. तो जो क्या है, हमारी पृथ्वी पर कितना 70% पानी है, और बिना पानी के जो लिविंग थिंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो बिना पानी के क्या है, हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है. लिथोस्फेयर, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो ठोस रॉक्स होते हैं ना हमारी पृथ्वी पे, इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स और स्टोन्स एंड स्फीयर मीन्स टू डोमेन. So, the term lithosphere can be described as rock sphere. So, lithosphere has an average thickness of about 100 km. It is irregular in shape and is not smooth like a tabletop, and includes various landforms such as mountains, plains, plateaus, valleys, etc. The part of the ocean floor which is also uneven and is not smooth surfaced. Lithosphere provides us mineral wealth, forests, grasslands, agricultural land and land for human settlements. Next one is hydrosphere. Hydrosphere यानी कि इसका मतलब है पानी से. Hydrosphere refers to all the water bodies on the earth's surface. It includes the water bodies like oceans, seas, rivers, lake, etc. Water is found in 3 states, i.e. solid, liquid and gas. Earth's 71% surface is covered with water. Out of this, 97% is found in the oceans, seas, etc., which is saline, and the rest 3% is found in rivers, streams, lakes, and ice caps for glaciers. तो हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी कितना कहाँ पे कैसे है. तो ठीक है ना, इसमें क्या है, हमारी वाटर बॉडीज हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ठीक है ना. और वाटर फाउंड इन 3 स्टेट्स, मतलब 3 तरह से पाया जाता है पानी. कैसे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अर्थ 71% सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. आउट ऑफ दिस 97% इज फाउंड इन द ओशियंस. ठीक है ना, उसमें जो है जो महासागर है, समुद्र हैं, विच इज सलाइन, एंड द रेस्ट 3% इज फाउंड इन रिवर्स, नदियों के रूप में.
झीलों के रूप में, आइस कैप जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें, जैसे अंटार्कटिका में है. वाटर इज इन कंटिन्यूअस मोशन ऑन द अर्थ एंड दिस कंटिन्यूअस मोशन इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल cycle. So from hydrosphere, water gets evaporate into the atmosphere where condensation takes place, and then in the form of raindrops, water falls on the lithosphere. So in this way, water keeps on moving from one sphere to another. Hydrosphere is very important for all sorts of life. It provides a habitat to the marine life and food in the form of fish, shrimps, crabs, etc. So international trade is carried on navigating the rivers and the oceans. Atmosphere. The blanket of air surrounds the earth is called atmosphere. Blanket मतलब एक तरह से हवा का जो कंबल होता है हमारे ऊपर, उसको एटमोस्फेयर बोलते हैं. The gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. So atmosphere protect us from harmful radiation. जो एटमोस्फेयर होता है हमारे ऊपर, जो एक मतलब मोटी चादर है, ब्लैंकेट है, वो हमें हार्मफुल रेडिएशन, जो सूरज की हार्मफुल रेडिएशन होती है उनसे हमें बचाता है. इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट, particles and water vapor. Any change in the atmosphere brings about a change in the weather and climate of the earth. It is due to atmosphere and water that our planet has life on it and our living conditions to sustain it. There are 5 main layers of atmosphere. These are troposphere, mesosphere, exosphere, stratosphere and thermosphere. Biosphere. The narrow zone where lithosphere and hydrosphere meet with atmosphere is called biosphere. Like this. पानी और एटमोस्फेयर और हवा, ये तीनों मिल रहे हैं यहाँ पे. देखिए, अर्थ, एयर एंड वाटर. The word biosphere comes from the Greek word bios, which means life, and the Latin word sphere, which means total range. Okay, so biosphere consists of plant and animals kingdoms and is also called a living world. Next is ecosystem. What is ecosystem? We know that plants, animals and human beings are dependent on each other for their food and existence. A community of a group of living organisms living in a compact of specific environment is called an ecosystem. A small pond is an example of an ecosystem where different species like fish, frogs, algae and water plants like lotus or lily live. The ecosystem is complex as there has to be a balance between thousands of species so that they can coexist. Human made environment. अब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया क्या है? Environment, यानी कि पर्यावरण है. Human beings are also a part of the environment and are influenced by it. They were totally dependent on their surroundings from an early period. As the number of people increased, the land used for the cultivation of crops also expanded. Along with the increase in needs and wants of people, forests were cut down to meet the demands of growing population for firewood. है ना? So constructions, furniture and for the establishment of industries, deforestation deprived wild animal of their homes. Animals were killed for food, skin and sometimes for fun as hunting became an entertaining sport. Due to the depletion of forest cover and harm to wildlife, the balance between human beings and environment was disturbed. If human beings do not stop exploiting resources of the environment, then it might be difficult for them to exist well. ठीक है ना? अब ह्यूमन मेड क्या होता है? जैसे वो खेती करते हैं, उसमें जो है पॉपुलेशन डिमांड, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, इन सब चीज़ों का इंतजाम करते हैं. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को बनाते हैं, है ना? इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, जगह जगह कंपनीज बनाई जाती हैं. तो ये सब क्या होता है? लाइफ को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें होती हैं. ओके, सो So the all topics are covered here. I hope you all are very well understanding. So we will meet you in next class.